We have covered the topic information science yesterday, in which we have discussed what is information science, what is information theory, what is information system, and what is the relationship between library science and information science, followed by how these two subjects are combined together to form a new subject, what we call as library and information science. We have also discussed the important objectives of information science. And finally, yesterday we have covered the scope of information science. These are some of the important parts of information science as per your syllabus, and we have almost completed every aspect related to information science. Today I am going to start a new topic of the same unit, and that is information society. Information science and information society are more or less well connected to each other. You will see in information society what library science professionals have to study regarding this important topic. See, as I said many times in my earlier classes, library is a social institution, and whatever we do in libraries is only for the benefit and development of the society. Not only this, if you see the syllabi of BLISC, you find a complete paper in the first semester named Library and Society. So, in this particular context, it is very much essential to understand the relationship between libraries and society. In library and society, we only study the role of libraries in the development of society. But here, at this particular stage, I mean at PG level, under this topic, information society, we are actually concerned with the impact of information on society, how the information is influencing the society, how the society is changing with the increase in the literature and knowledge as a whole. So what are the changes that have been brought in the society with the rate of growth of information that we have to see in this particular topic? This topic is also important for examination point of view, and the question is normally asked, what do you understand by information society? And discuss the important perceptions in information society.
इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है और इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्यों बनी, इंफॉर्मेशन से सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है। तो आपको मैं दिखा दूं, कुछ मैंने रात स्लाइड्स तैयार की आपके लिए, आप देख सकते हो। दिख रही है आपको स्लाइड? यस सर, दिख रही है। Yes, sir. First of all, I have tried to explain the general concept of information society. I have read a number of books, not only the books, the articles and the literature available in different forms to understand the viewpoint of many information scientists regarding information society. So information society is a much used expression. बहुत ज्यादा इस टर्म का अब इस्तेमाल होने लगा है। The term has been characterized by various dimensions और हर व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार इस टर्म का यूज करता है। Several authors have tried to define and interpret this term according to their own perceptions. As I said earlier, there has been a number of perceptions regarding this information society, and most of the authors have defined this term information society in according to their own perceptions. Whatever their approach is to define the term information society. What strikes one in reading the voluminous literature on the information society is that so many writers operate with underdeveloped definitions on their subject. जिस लेखक के विषय में जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ती है वो उसी को मान करके इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डिफाइन करता है। तो उससे क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में लिटरेचर का रेट ऑफ ग्रोथ जो है कम है तो वो डेफिनेशन उसकी उसी प्रकार से बनती है, लेकिन जिस एरिया में जिस सब्जेक्ट में लिटरेचर के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है तो उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी की डेफिनेशन जो है वो बदल जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड देयरफॉर द ऑथर्स व्हाट दे डू, they actually define the concept of information society according to their own approach. I have compiled some definitions given by well-known authors regarding information society. Branscombe in 1986 has defined information society as a society where the majority of people are engaged in creating, gathering, storage, processing, or distribution of information. This is, I think, a good definition given by Branscombe because of the fact that what he says, most of the people who are engaged in creating, gathering, storage, processing, or distribution of information, he is actually talking about the librarians, because
Librarians are the people who are regularly involved in creation, gathering, storing, processing, and distribution of information in their respective libraries. So, the definition given by Branscombe in 1986 is specifically in the concern of librarians. I'm not talking that librarians are the only people who are engaged in creating gathering, but we can talk about the teachers as well, because teachers also create knowledge, gather knowledge, store knowledge, process knowledge, and then finally they distribute before the students or among the students. So they are also concerned, they are also involved in the process of creating, gathering, storing, processing, and disseminating the information for their students. And therefore we can say that the people who are engaged in this process is known as information society. Cochin in 1987, just after 1 year, he writes that the simple notion of a society in which information rather than material flows constitute most of its communication and control. Exchanges is extended to stress that this is actually a detailed definition given by Cochin. उसके अनुसार जो 1987 में मानफ्रेड कोचिन ने कहा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में एक्चुअली इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो किसके लिए है? कम्युनिकेशन और कंट्रोल के लिए. एंड एक्सचेंजेस इज एक्सटेंडेड टू स्ट्रेस दैट most members generate knowledge by knowledge based procedures that are knowledge intensive. ज्यादातर लोग जो है वो नॉलेज को जनरेट करते हैं. कैसे? नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस से. हम टीचर्स हैं, एज ए टीचर हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं, नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, और उससे इंटेंसिटी जो है नॉलेज की वो बढ़ा करके हम अपने विद्यार्थियों को दे पाते हैं. इसी तरह से लाइब्रेरियंस जो हैं उनका भी काम यही है कि वो नॉलेज को जनरेट करते हैं और उस नॉलेज को अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं. ये कोचिन के व्यू पॉइंट्स हैं. इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट्स बेसिक सोशल वेरिएंट्स. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? सोशल सोसाइटी को, सोशल वेरिएंट्स को. जो सोसाइटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. रीजन एंड ह्यूमन वैल्यूज रादर देन स्ट्रेंथ एंड एक्सपीडियंसी manage conflicts between pressures to conserve invariants and pressure to adaptive change. आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी पर जो हम आज के समय में देख रहे हैं वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसकी हम कोई मेजर नहीं कर सकते उसको. आप देखते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह से इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज बने हुए हैं कि हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं और जो स्पीडली मैसेजेस आते हैं वो क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज, एंड वी एक्चुअली फॉलो दोज. हम बिना उसको जाने समझे और उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने हम उस पर विश्वास करते हैं.
if you see, this COVID-19 pandemic is still continuing, and we get a number of messages for this regarding this COVID-19 pandemic. So you can see the impact of information on society. कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे, किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोले, किसी कोई एजुकेशनल सर नमस्ते। वेबसाइट खोले, नमस्ते, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट खोले, किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की वेबसाइट खोले, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोले, तो आपको सबसे पहले मेन पेज पर आपको कोविड-19 पैंडेमिक का आइकन दिखाई देगा। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली an icon that provides information regarding this COVID-19 pandemic. So what I'm trying to tell you is that the information plays an important role in the development of the society. Not only this, but also affect the society. Here are some more definitions given by different pupil. कोचिन की डेफिनेशन को यहाँ समराइज किया गया है, जो आपने पिछली स्लाइड में देखी। वो क्या ऐड करता है अपनी बात में? वो कहता है an information society is a stage in the evolution of community brains towards a world brain. बहुत ही अच्छी बात है, डेफिनेशन है। कोचिन के अनुसार इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज ए स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन्स। कम्युनिटी किसे कहते हैं? समाज को कहते हैं। उससे समाज के जो ब्रेन्स का इवोल्यूशन होता है, जिससे विश्व के ब्रेन का इवोल्यूशन होता है, वो ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहलाती है। रॉनफेल्ड 1992 में कहता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज वन विच सीज द स्टेडी ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज विच प्रेजेंटली सेपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटेलाइट, ग्लोबल नेटवर्क्स एंड मैनी मोर। उसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन है रॉनफेल्ड की, क्योंकि 1992 की डेफिनेशन है तो जाहिर है थोड़ी अपडेटेड डेफिनेशन होगी। वो उसके अनुसार कि इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आप कंप्यूटर हार्डवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, ग्लोबल नेटवर्क्स और इस तरह के अन्य साधनों से जो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं, शेयर करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, उससे समाज में एक बदलाव आता है। तो वो बदलाव जो है समाज का, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहलाता है। मार्टिन कहता है 1978 में उसने कहा था, द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज कम टू रिप्रेजेंट सोसाइटीज एट एन एडवांस्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज characterized by high degree of computerization, large volume of electronic data transmission, and an economic profile heavily influenced by the market and employment possibilities of information technology. जेम्स की जो डेफिनेशन है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड है। उसके अनुसार इंडस्ट्री में जो काम होता है, इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है और वहां उपलब्ध संसाधनों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करके नई चीजें बनकर आती हैं सामने, वो नई इंफॉर्मेशन जो है, वो नई रिसर्च जो है, उससे समाज में न सिर्फ बदलाव आता है बल्कि उससे एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो जेम्स मार्टिन की डेफिनेशन में इंडस्ट्री रिलेशन की बात की गई है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी
का अस्तित्व जो अमल में आया उसका मुख्य कारण ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन के आधार पर जो इकोनॉमिक पे असर पड़ा, जो इकोनॉमी बढ़ी देश की, दुनिया की, उससे न केवल समाज में परिवर्तन आया बल्कि एम्प्लॉयमेंट के भी रास्ते बनते चले गए। तो जेम्स मार्टिन की डेफिनेशन में इंडस्ट्री रिलेशनशिप की बात की गई है जहां तक इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात है। हमें यहाँ डिस्कस करना है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने जन्म लिया। व्हाट आर द फैक्टर्स which are responsible for the arrival of information society. There has been a number of factors, but I have tried to mention here some of the important factors which are actually determining the arrival of information society. When we use the phrase information society, we usually mean society as a whole. The problem is how to distinguish an information society and whether it has arrived. We have but to listen to the commentators and leaders to perceive the signs all around us. The information society is a direct consequence of. These are some of the important factors which are determining the arrival of information society. And these are: the first important factor is the data explosion, the knowledge explosion, the information explosion. We have seen many times, I have mentioned in my class that we have two different problems as we talk about. कल मैं देख रहा था ग्रुप में के सर ने जो टॉपिक दिया था, मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज in colon classification scheme. Why we talk about these topics? क्यों हम इन टॉपिक्स पर बात करते हैं? उसका मुख्य कारण यही है जो क्लास में मैं कई बार आपसे जिक्र कर चुका हूं कि द नंबर ऑफ concepts are unlimited. That means the knowledge, the information, the data is increasing at a very, very faster rate, right? And the number of digits are limited. And our responsibility is to provide the most appropriate of a particular concept in the already existing concept in a scheme for classification. That is the problem. And that is why we study these type of topics, as yesterday KK sir was talking about the mapping of universe of knowledge in colon classification. Because of the fact data explosion, knowledge explosion, information explosion, the information is increasing day by day. According to a survey, according to a research, the rate of growth of literature in the field of science and technology is doubling itself only within a span of 5 years. So you can understand the rate of growth of information around the globe. And that is why this has been considered as the most important factor in determining the arrival of information society. The second, the growing information consciousness and information dependence of society at large. As you know that you are free for generating, creating information, and nobody can stop any person to produce new knowledge. So it is basically
इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन पर। जिस रफ्तार से इंफॉर्मेशन ग्रो करेगी, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन की बढ़ोतरी होगी, उसी आधार पर सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट होगा और सोसाइटी पर उसका इफेक्ट होगा। एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जाहिर है इंफॉर्मेशन एक्सीलरेट कब करेगी? जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। आप देखते हैं कि पहले यूजर को किताब की तलाश में एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी जाना पड़ता था, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक स्थान पर पूरे विश्व के ज्ञान को देख सकते हैं, पूरे विश्व की लाइब्रेरी की किताबों को देख सकते हैं। because now we have very advanced communication technologies in basically in libraries, and we are not supposed to move from one place to another to get the information on the desired topic. Here we have, as I said, different perceptions of information society. What do you mean by perceptions? Supriya? सर परसेप्शन मीन्स सर मतलब सर जैसे कि सोचना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनुमान लगाना। Yes, very good. अनुमान लगाना, यस आगे क्या हो सकता है, आगे क्या संभावनाएं हैं। यस सर। जो जैसे हम क्लासिफिकेशन स्कीम डिजाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम में अमेंडमेंट्स करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि दिस मे हैपन इन द डेज टू कम, आने वाले समय में ये हो सकता है। उसको आधार मान करके हम क्लासिफिकेशन स्कीम में संशोधन करते हैं। आपने देखा 19th एडिशन में टीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के 19th एडिशन आपने पढ़ा, उसमें 000 जनरलिया की जो मेन क्लास है उसमें बहुत सारे नंबर्स जो है वो अनअसाइंड है। 002, 003, 004, और आपने देखा होगा आगे लिखा है अनअसाइंड, अनअसाइंड, अनअसाइंड। उसका मतलब ये है कि उस समय ये मालूम हो गया था, आभास हो गया था, परसेप्शन था कि आने वाले समय में इन एरियाज में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है। और आप 23rd एडिशन अगर आप देखें तो वो सारे जितने भी अनअसाइंड क्लासेस थी 19th एडिशन की, वो पूरी तरह से भर चुकी हैं और नए आइडियाज, नए कंसेप्ट जिन्होंने बाद में जन्म लिया, उनको वहां अकोमोडेट किया गया। तो यही बात कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में कल के सर ने पढ़ाने का प्लान किया होगा कि हाउ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज मैप्ड इन colon classification scheme. So here some of the important perceptions of information society that we have to discuss. I have only selected 5 important perceptions. And these perceptions are no doubt very, very important for the development of society. आने वाले समय में इन perceptions में हमें क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, या क्या बदलाव हम आज के समय में नोटिस कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो कल हम इस पर विस्तार से बात करेंगे।
कि ये 5 परसेप्शंस जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ये क्या है और इससे समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर किस प्रकार से बदलाव या प्रभाव पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप जिस तरह से कर रहे हैं क्लास अटेंड मेरी करते रहिए, और मैं चाहता हूं कि 3-4 और लेक्चर में मैं अपना सिलेबस पूरा कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, एंड आई विश यू माय बेस्ट विशेस। थैंक ओके, यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर हमारे नमस्ते। एग्जाम कब से स्टार्ट है एक्सटर्नल? योगी जी बताएंगे। नहीं सर, 20 से कह रहे थे ना पहले। पहले कह रहे थे ना, पहले तो ये कह रहे थे कि रोज क्लास होगी, अब घर बैठे हो तुम। यस सर। बेटा, जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। और आज का अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा हो तो उसमें समाचार प्रकाशित हुआ है कि जनवरी में प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। तो अभी जो भी शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई होगी। ठीक है? ओके ओके सर। लेकिन पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए। तैयारी अपनी ओके पूरी सर। रखो, पढ़ाई अपनी पूरी रखो। इसीलिए मैं भी क्लास रोज ले रहा हूँ। पता कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है? ओके, ओके सर। यस सर। थैंक यू। नमस्ते। 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 नमस्ते।